trainings as well as individual trainings. As far as my qualification is concerned, as ma'am has already explained that I'm a graduate and postgraduate in business administration, and then I've done various certifications like HR journalist. Then I've done diploma in training and development from Indian Society of Training and Development, and certified POSH trainer and certified human resource business partner. These are related to HR certifications. I'm also doing the program in digital marketing. So this is all about me. I would like to know a little about you guys also, so that maybe not much, but just your name and what role you are doing as of now. I believe you all are working, so you can just explain your designation part and the number of year of experience you are into. So just a quick introduction before we proceed further. Let's start with Kalpana first. Kalpana, are you there? Yes, ma'am. Okay, please start with that. Good afternoon, Sweta ma'am. I have worked with the logistics company as an assistant manager HR. So I have experience of 5 years, and I was handling their HR journalist part like payroll, employee engagement, and HR administration. Okay, great. Okay, Thank you. thank you. Jaya Lakshmi. Hi, Shweta. Hi. As you know already, my name, myself Jay Lakshmi, and I do have nearly 10 years of experience. And some part I have worked with consulting firm, and now I am with a IT company working into training department and into freshers recruitment. And I also have experience in recruiting that mid-level management as well as senior level management and other technical roles. So right now, just like they have asked me to take leave for a long time. So it's like Our video got paused, maybe I due guess to yeah, technical there's issues. some network So issue. let us go to Swarnim now. Okay. Hi, Shweta. Swarnim here. Hi. So, Shweta, currently, right now, I'm not working. I lost my job due to COVID. Earlier, Okay. I was working with a consultancy in Faridabad only. So, majorly, like from past 4+ years, 4.5 years, I was there with the consultancy. They were dealing with IT companies only. So, Mm-hmm. basically, I was into IT recruitment. And prior to that, I have worked with the engineering firm. There, I was working as a HR or as a TPO. I have joined there, and Okay. slowly, I have been into HR activities also. But there, I left the job. So in total, do have around 6+ years of experience, Great. majorly Great. into recruitment. Okay. Aarti. Aarti, if you have finished food, otherwise we'll start with Malvika. Please start. Hello, hi ma'am. This side Hi. Aarti. Actually, I had experience of 5 to 6 years in multitask. Like I had done accounts work also and admin work also, not the receptionist. And HR in the last at the time of I had conceived my baby, so not much experience in HR, only just payroll. Okay. Okay. Right. Okay, great. Malvika. Hello, Shweta ma'am. Good evening. Hi. Good Malvika evening. this side. Hello. Yeah, I have an experience of like 3 to 4 years in real estate as an HR, and I have been dealing with some marketing portion also. As if Okay. I've been like since my seniors have been saying that I am good in dealing with their clients, so I've been doing with the marketing also. But last for 2 years, I'm not working as if my baby is small. So I'm just going under training to the other line. Thank you so much. Thank Great. you. Now we have two beautiful candidates and very young candidates, Mansi and Navpreet. Navpreet, Okay. Eid ka chand hai.
वो कभी कभी शक्ल दिखा देता है, आई डोंट नो। अगर आज हम लकी हैं तो हम नवप्रीत को देखते हैं। नवप्रीत, आप बात कर सकते हो? Yes, ma'am. Hello, Shweta, ma'am. My name is Naprit Hi. Kaur, and I'm a student of MBA. I have no experience. Okay, that's okay. Okay, Mansi, please. Why don't you come on cam, yaar? Mansi, जान सा मुखड़ा दिखाओ भाई। ये देख रही है, पहले मुझे कोई तो देख नहीं रहा कमरे में, फिर मैं कैम ऑन करूं। You're on mute. On her forehead. Hello, Hi. good afternoon, Didi. My name is Mansi. I am MBA student. I have no experience. That is a big That's experience of absolutely okay. giving good smile. You know, I love their smile. अगर इसका चेहरा नहीं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि आज ग्रुप में कोई नहीं आया। और ये लोग दोनों जो है ना कैम के पीछे ही रहते हैं ज्यादातर, नवप्रीत एंड मानसी। मैं तो आ जाती हूँ So कहीं। it's nice they're getting experience, they're getting ready for future HR. So Shweta, it's your side now. Take it over. When it get disconnected, kindly rejoin because it's showing 10 minutes are there. If you want, you can have some more interaction and we can start the subject immediately after the 10 minutes over. How do you suggest, Shweta? So I'll try to quickly wind up. Let's see how things proceed further. Yeah, please. Right. You can take it. I would just You got, like. so you can take it up HR also. Okay, okay. I would like to touch down based on the qualities or the lessons that I have learned in my 13 years of experience, the qualities which are required. So we generally focus on the functional skills, the various skill sets which are required to do a job, right? Whether it's recruitment or the training, what all skill sets are required. So I would touch down based on the attitude which is required to grow in our career, right? So the first point that I have realized is that our first job, which we always join, may not be our dream job, right? But then it can definitely be a stepping stone for the right job or for our dream destination or for our dream job, you can say. So as far as I am concerned, when I started my career, my first job was not related to HR. It was related to marketing, right? But as a marketing person also, as a sales person also, so I tried to learn a lot. Okay, so initially बहुत inhibitions थी कि मुझे marketing का job क्यों मिल गया, मुझे तो ऐसा job नहीं करना चाहिए था. But then I learned as I grew in my career, as I learned about the product line in which we are dealing. So जो भी मेरे juniors थे, I was given this opportunity to train them. Okay, so training again is an aspect of HR, right? And in the first job also, I learned about interacting with people. Okay, so जो interactions होता है customer के साथ, employees के साथ, how to maintain relations, that I learned from my first job. So जरूरी नहीं था कि मेरे को first job HR का मिला, लेकिन वहां से जो मैंने learn किया, वो definitely मेरे लिए HR में बहुत ही आगे जाकर helpful रहा. This is the point what I want to make over here. कि यूजुअली क्या होता है व्हेन वी स्टार्ट आवर करियर, हमारा बहुत ही ओवरली कंसर्न होता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब करनी है या एक बड़ा ब्रांड मुझे मिलना चाहिए. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर कम हुए तो वी जनरली फील कि नहीं, ये तो छोटी सी कंपनी है, इसमें ज्यादा कुछ लर्निंग नहीं होगी. दीज आर ऑल दी ओवरली जो थॉट्स होती है हमारे माइंड में, विच आई वुड से कि हम जब जॉब अपना स्टार्ट करते हैं, जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो हमें इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए. रादर ट्राई टू लर्न उस जॉब से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं. दैट इज फर्स्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक. एंड द सेकंड पॉइंट that I would like to focus on is that no job or no assignment is small. यूजुअली क्या होता है कि एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम लोग अपने करियर ग्राफ में ग्रो करते हैं, कई बार ये हमारे सीनियर्स हमको बोल देते हैं कि ये वाला काम कर दो, तो हमें लगेगा कि यार ये दिस इज नॉट माय जॉब, लाइक आई एम नॉट सपोज टू डू दिस. ओके, ये तो इसके लिए तो कोई और भी कर सकता है ना, तो मुझे करने को क्यों बोला जा रहा है. बट द पॉइंट इज कि
जितना जो यूजुअली क्या होता है कि हम बड़े एस्पेक्ट को करने के लिए बहुत अच्छे से हम उसको प्रॉपर डिटेलिंग में जाते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंड छोटे काम को करने के लिए स्मॉल वर्क में जनरली हमारा बहुत ही इजी गोइंग एटीट्यूड हो जाता है, या केयरलेसनेस आ जाती है कि ठीक है ये तो छोटा सा काम है, ये तो यूं ही हो जाएगा, राइट। बट when we give precision, जब हमारी उन छोटे टास्क में भी डिटेलिंग के साथ हम काम करते हैं, that actually shapes up our character, right? That helps in building our credibility. Like for example, when I just started my career, कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे मेरे सीनियर ने एक दिन बोला कि I'm just giving an example, maybe that he'll just call me and said कि श्वेता ये कुछ ना पेपर से उनको फोटो स्टार्ट कर दो। मुझे उस टाइम पे लगा कि मुझे फोटो कॉपी करने के लिए क्यों बोल रहा है, व्हाई दिस पर्सन इज आस्किंग मी टू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी, और मे बी स्कैन कर दो या ये पेपर्स को फाइलिंग कर दो। ये जो टास्क हैं, these are very small, but the way we used to do it, that reflects the kind of behavior we have, right? क्योंकि फोटोकॉपी करना is not a big deal, but लेकिन जब हम करते हैं तो वो कभी होता है कि कोई लाइन क्लियर नहीं आ रही है, टेढ़ा सा फोटोकॉपी है, या स्कैन ठीक से नहीं हुआ है, या अगर हमको फाइलिंग करने के लिए बोला है तो हमने पेपर्स को ऑर्डर में नहीं अरेंज किया है। So that reflects the kind of detailing we are giving to that work. Okay, so that's why I said that no work is small. चाहे आप जितना अपने एफर्ट एक बड़े जॉब को करने के लिए दोगे, उतना ही एफर्ट आप छोटी असाइनमेंट को भी देना चाहिए. So that is my second point which I wanted to make. And the third point is that try to be indispensable, try to be irreplaceable where you are. तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जिस भी रोल पे आप काम कर रहे हो, ट्राई टू गिव योर 100% ओवर देयर. ओके, आपका मेन जो एम है वो ये होना चाहिए कि व्हेन आई लीव द ऑर्गेनाइजेशन, माय एब्सेंस शुड बी फेल्ट बाय द सीनियर्स. ऑब्वियसली जैसे आप जो जॉब छोड़ के जाओगे तो डेफिनेटली अदर्स लाइक विल बी रिक्रूटेड ओवर देयर, राइट? बट देन योर मैनेजमेंट मस्ट से कि हाँ यार, वो मानसी एक बंदी थी जो बहुत अच्छा काम करती थी, या आरती थी, या मालविका थी, या स्वरिम थी. These were the candidates whom I really admire for their work, or the kind of work they have done in our organization. So that should be your takeaway कि भाई मुझे ऐसा बनना है. Your work should be like, you must sincerely and honestly work where you are doing. Okay, तो आपका जो behavior है, कुछ भी ऐसा conduct नहीं होना चाहिए जो कि आपको later on regret हो. Okay, so you should never you should always conduct yourself in a way जिसपे आपको कभी भी regret ना हो. Okay, and the last point which I want to make over here is that never go complacent in your work. नॉर्मली क्या होता है कि एज वी ग्रो, और जो भी हम एक लिमिटेड एक पर्टिकुलर टाइप का जब हम काम करते हैं, वी ऑफन गेट मोनोटोनस, और हमें लगता है कि यार ये काम तो मुझसे चुटकियों से हो जाएगा, लाइक जल्दी से हो जाएगा. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज केयरलेसनेस आ जाता है. वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि ये तो जल्दी से हो जाएगा, ये तो यूं ही हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट यू शुड नेवर गेट कॉम्प्लेसेंट. सो जितना डिटेलिंग के साथ, जितना प्रिपरेशन के साथ आपने वो काम फर्स्ट टाइम किया था, उतनी ही डिटेलिंग, उतने ही प्रिपरेशन के साथ आप वो 10th टाइम जब आपको वो काम करना है तब भी करो, जब आपको वो काम 100th टाइम करना है तब भी करो. So you need to be consistent in your performance without getting overconfident, okay, and without getting complacent in your performance, right? And as you all are working, so please always try to challenge your limitations. कई बार ऐसा होता है कि हमें सीनियर्स कोई डिफरेंट रोल देना चाहते हैं, एंड वी ऑफन से नो, मैं नहीं कर पाऊंगी. वी ऑफन हेसिटेट इन टेकिंग द न्यू रोल्स, राइट? सो द लर्निंग इज दैट यू मस्ट ऑलवेज चैलेंज योर लिमिटेशंस. आप किसी भी काम को, जो भी आपको असाइनमेंट दी जाती है, उसे नो मत करो. गिव योर बेस्ट टू डू इट, बिकॉज उस केस में भी आपके लिए कुछ लर्निंग होगी, राइट? एंड लेटर ऑन यूजुअली हम लोग का माइंडसेट होता है कि ये जो काम मुझे दिया जा रहा है ये मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज समवेयर लाइक मुझे आगे जाके ये काम नहीं करना. ओके, सो दिस रोल माइट नॉट हेल्प मी in my later job or in the years down the lane, but you never know कि वो कौन सा काम आपने जो पहले किया था वो आपको कब जाके हेल्प करे. Okay,
So never say no to whatever work is being assigned to you and always give your best. And main जो मेरा point है, so make your absence felt. So all these points अगर आप इसको अपनी life में apply करोगे, so this will help you in building your brand. Okay, आजकल हर कोई जो है ना हम अपनी brand building की बात करते हैं ना, so ultimately job में भी brand building आता है, right? These all points will help you in building your credibility in the organization, right? And that is how आपकी demand भी later on जाके बढ़ेगा. Okay, so this is what all I wanted to share with you all. If anybody want to say something, any suggestion, any input, or just any question, you all can ask if we have time. So probably we have less than 1 minute, I guess. Ma'am, Shweta, ma'am, can you repeat the first point alone, ma'am? First point that you told. First point I mentioned was that your first job may not be your dream job, but then this will always become a stepping stone for your dream job or your the destination. As in जो आप career में अपने लिए सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना था, तो आपकी जो first job है वो आपको definitely उस level पर लेके जाएगी. So the point I made over there is कि अपनी first job को बहुत ही lightly नहीं लो या for granted मत लो कि ये तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे तो वहां पे जाना है. So learnings जो भी आपको अपनी first job में भी learnings मिल रही हैं, try to absorb as much